in us. We called people from various backgrounds, directors, comedians, right, speakers, authors, and even CEOs of top companies till now to give exposure to the. Why Ignite, you ask? From the time I and Vipul started in 2011, I need to tell you truthfully, we fell in love with the process of this examination, preparing, and getting into a top notch college, competing with the best in the country, much more than getting into the college itself, the degree itself. And that is why we wanted to make this process of preparing, getting into a top notch college as a life changing process. We kept doing a lot of things, and then we came up with this flagship event of ours called Ignite. Now, everyone has that moment, right? The moment of magic, which ignites that spark in us. We called people from various backgrounds, directors, comedians, right, speakers, authors, and even CEOs of top companies till now to give exposure to the student community at large. I wish all of you will come and join us in every Ignite that we conduct, so that you never know what ignites that spark in you. Thank you. All right, good morning and welcome all. My name is Abhishek Singh. I happen to be a part of a great team at IMS Gujarat Orphicy. Welcome all to Ignite. आज हमारे साथ गुजरात के अप एंड कमिंग स्टार्टअप के फाउंडर सर भी हैं जो हमको बी टेकिंग अस थ्रू द सेशन अलोंग विथ मी. सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा अपनी ऑडियो विजुअल चेक, अगर मैं ऑडिबल और विजिबल हूं तो गिव मी अ क्विक यस इन द चैट. यूट्यूब जूम जैसे भी आपने लॉगिन किया, गिव मी अ क्विक यस, गिव मी a raise of hand, thumbs up, whatever there is available. Give me a quick acknowledgement so that I know I'm audible and visible to all. Okay, I'll start it one more time since our audio was not very clearly audible to all the audience. So, good morning and welcome all to Ignite 5.0. My name is Abhishek Singh. I happen to be a part of the team at IMS Gujarat Orphicy. आज हमारे साथ हैं उज्जवल सर, जो गुजरात के सबसे अपकमिंग, फास्टली अपकमिंग स्टार्टअप के को-फाउंडर है. उज्जवल सर is here with us. Let's have a big round of applause for Ujjwal sir. On that note, again, I will quickly ask for everyone to confirm me with the yes or a thumbs up or a raise of hand that I'm audible and visible to everyone, and a round of applause for Ujjwal sir one more time. Okay, guys, we are thank you, Abhishek sir, firstly for the introduction. We are just going to get our audio in place, right? We will do a round of mic testing so that it is an amazing experience for you as we go forward. If needed, we can have another mic being used. But I want to know, which cities are you from? I would know that from you guys. Which cities are you from? In the chat box. अरे वाह, मुझे दिख रहा है. There are people joining on the YouTube channel. There are people joining on Zoom, and I can see people saying people are here from Bhopal, Ujjain, Indore, Vadodara, Ahmedabad, Surat, Vidyanagar. Wonderful to see all of this. Guys on YouTube, I want more comments coming on YouTube as well. YouTube पे बच्चे हमें बता रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आ रहे हैं और मुझे बहुत सारे रिप्लाईज मिल रहे हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पांस. वी आर जस्ट गेटिंग यू वार्म्ड अप, राइट? Thank you everyone for your response.
जितने भी बच्चे YouTube पे जो भी लिख रहे हैं, मेरी टीम मुझे रिले कर रही है एक एक मैसेज, मैं देख पा रहा हूं. थैंक यू टीम फॉर रिलेइंग इट सो वेल टू मी दैट आई कैन सी एवरी कमेंट ऑन YouTube as well as on Zoom, right? Great. Okay, okay guys, सांगली से बच्चे आए हुए हैं, अहमदाबाद से, and that is wonderful to see people coming from Delhi and Srinagar and also Guwahati, etc. Great to see that. Wow. Perfect, guys. Great to have all of you. We welcome all of you from the depth of our heart. I would like to introduce our major host for today, Abhishek sir. He is the one who is going to lead the session. I think sir has something to share with you before we go to our speakers. Abhishek sir, over to you. डेफिनेटली सर, बहुत ही सारी जगहों से हमारे साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन इन करे हैं. ऑल अक्रॉस द नेशन वी हैव स्टूडेंट्स ज्वाइन इन टू आवर इवेंट. द इवेंट इज टाइटल्ड इग्नाइट, राइट, जिसका जहां तक मुझे मतलब पता है कैचिंग फायर, कैचिंग स्पार्क. क्या आप लोगों को एनलाइटन करना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या और ये इवेंट क्या वैल्यू होल्ड करता है सभी के लिए? Okay, so what sir has just told me is to explain what is ignite. ठीक है, कई लोग पूछ रहे हैं ना इग्नाइट क्या होता है. इग्नाइट मतलब जहां से फायर का स्टार्ट होता है. दैट इज व्हाट इट मींस. Why did we start Ignite in the first place? We had this event started because we fell in love with the process of education. ठीक है, जितना अमेजिंग होता है ना मार्क्स लाना, एग्जाम में बहुत अच्छा करना या डिग्री तक पहुंचना, उससे ज्यादा अमेजिंग होता है वो प्रोसेस वहां तक पहुंचने का. एंड दैट इज वाई वी थॉट कि ये प्रोसेस को अमेजिंग बनाना चाहिए. ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. दूसरी बात, ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच ही जाए, कई कारणों की वजह से. ठीक है, सपोजिंग आप वो जो डिग्री पाना चाहते हैं, वट एवर एग्जाम स्कोर, परसेंटाइल दैट यू वांट टू अचीव, वो अगर नहीं भी कर पाए, पर आप अगर अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते, that is why we started Ignite. And Ignite is one such event जहां पे हम आपको बहुत सारे लीडर्स से मिलवाते हैं जो अपनी लाइफ स्टोरी आपको बताएंगे कि हर आदमी जो सक्सेसफुल हुआ वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ विनर ही रहा. बहुत सारे फेलियर्स भी देखने होते हैं. आज हम ऐसे कई सारे लोगों से मिलेंगे who are amazing people. We are waiting for all of them to join in. I think I'm sure that फाल्गुनी मैम वुड हैव जॉइंड इन. आई होप मेरी टीम उनको वेलकम करने को तैयार है, उनको को होस्ट बनाने को तैयार है, सो दैट शी कैन स्पीक. वी वुड नाउ हैव अभिषेक सर टेक अस फॉरवर्ड फॉर हिज स्लाइड्स प्लीज. या ओके, तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा, दिस इज इग्नाइट 5.0, जिसका मतलब ये इग्नाइट का 5th एडिशन है. जिसका मतलब ये भी है कि इससे पहले हमारे 4 एडिशंस ऑफ इग्नाइट हो चुके हैं. एंड वी वुड लाइक टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन अ लिटिल ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीवियस एडिशंस. फॉर दैट वी हैव अ वीडियो फॉर यू गाइस व्हिच वुड बी फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. Okay, and I think the video has been seen by you guys, so let me explain to you the same thing, right? जो आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखा ना, वही वीडियो के बारे में हम मेंशन करना चाहते थे. डाउन द मेमोरी लेन जो है, इसमें हमने आज तक इग्नाइट में कैसे कैसे स्पीकर्स को बुलाया है, वो मैं आपको बताता हूं. हमने कॉमेडियंस को बुलाया, हमने एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया, हमने डायरेक्टर्स को बुलाया. गौरव दगाओंकर जैसे IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट जो आगे जाके म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर वगैरह बने, ऐसे लोग भी आ चुके हैं. रश्मि बंसल जैसे IIM अहमदाबाद ग्रेजुएट जो आगे जाके ऑथर बनी, ऐसे लोग भी आ चुके हैं. एंड वी हैव आल्सो हैड पीपल हु आर फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स, CEOs एक्सेट्रा. और ऐसे ही प्रोसेस में आज आपके सामने कुछ अमेजिंग स्पीकर्स आने वाले हैं. गाइस, आई वुड रियली लाइक टू थैंक all the mentors at IMS and Orphicy for the effort. Guys, I hope आपकी तरफ से मैं थैंक करना चाहता हूं इन्हें कि इतना आगे जाके ऐसे लोगों को बुलाना और आपको एक्सपोजर देने की ये कोशिश कर रहे हैं. And I absolutely love the setup that we made today. Thank you, the entire team, for the operations. Great. Yes. Since we are thanking all the team, right, we would also like to thank our interns who are our students at IMS only, who've made this event a grand success already. Right, so thank you very much to all the interns who've been a part of this event.
With that, right, I have a few information for you guys, right? So the information goes like there are multiple set of audiences that we have. आज हमारे सेशन में मल्टीपल सेट ऑफ ऑडियंस है. कुछ लोग हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं. जूम के ऊपर जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो काफी यंगर सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइन इन कर रहे हैं. यूट्यूब पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हैं वो ज्यादातर लीडरशिप, मैनेजमेंट एज अ करियर, इन सारी चीजों में करियर्स बनाने को एस्पायर करते हैं, और उनके फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इन सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्विक इंफॉर्मेशन है जो इन्हें जाननी बहुत ही जरूरी है. जैसे कि इग्नाइट एक ग्रैंड स्केल का इवेंट है जहां पर हम आपको इन तरह के लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एज वेल. We have yes, so we have many more such sessions coming up for all kind of students, all kind of set of audiences as such, जिसमें जो स्टूडेंट्स हमारे साथ YouTube पर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर उन्हें इनका एक्सपीरियंस लेना है तो एट IMS वी हैव अ जीरो फ्री प्रोग्राम जिसके साथ आपको 15 डेज का एक्सेस मिलता है. यू कैन गो टू IMS's वेबसाइट and go on to this particular program, enroll for it for free of cost, and experience that overall process as such. For the students who are joining us on Zoom, right? Yes, yes. Yeah, I'll repeat the content again for what I have spoken. So we have two set of audiences with us. One joining us on YouTube, one joining us on Zoom. For the people who are joining us on YouTube, right, I will bring this information back to you in a second, right? By that time, again, reiterating on the fact that we have a large set of audience ranging from 11 years old to 25, 26, maybe more than that as well into this event. ये दो set of audiences जो है वो हमारे साथ दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हुई है. जो यंगर सेट ऑफ ऑडियंस है स्टार्टिंग फ्रॉम 10, 11 years old, वो हमारे साथ जूम प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन हुए अपने पेरेंट्स के साथ. जो अस्पायरिंग लीडर्स, मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स हैं और उनके सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, फैमिली हैं, वो हमारे साथ यूट्यूब पर ज्वाइन हुए हैं. इन दोनों ही ऑडियंस के लिए हमारे पास कुछ क्विक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. जैसे कि इग्नाइट एक इतना बड़े पैमाने का इवेंट है, उसी तरह से हम काफी सारे वैल्यू एडिंग इवेंट्स करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. इनको एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब पर ज्वाइन हुई है ऑडियंस, वो IMS के वेबसाइट पर जाके IMS का जीरो फी प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करके इन्हें एक्सपीरियंस कर सकती है. फॉर द ऑडियंस हु हैज जॉइंड अस ऑन जूम, जो छोटे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये सारे इवेंट्स और मल्टीपल चीजें, अलग अलग तरह के लीडरशिप, ट्रेड जनरेटिंग सेशंस, ओरिएंटेशन सेशंस एंड ऑल ऑफ दैट वुड बी हैपनिंग ऑन Orphicy's चैनल, जिसके लिए आप Orphicy ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes. Okay. So just to explain something that sir has done, what you have to do is, जितने भी बच्चे स्कूल में हैं, आप लोग अपने एप्पल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, Orphicy ऐप डाउनलोड करिए. उसमें ऐसे बहुत सारे सेशंस कंटिन्यूअसली आपको देखने मिलेंगे. कई सारे एनिमेटेड वीडियोस एक्सेट्रा भी आपको मिलेंगे. फॉर द स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब, ये बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग हमारा IMS का जीरो फी प्रोग्राम होता है. एक फ्री लॉगिन क्रिएट करके आप लाइफ एट IMS एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन गो टू दैट लॉगिन और उसके अंदर बहुत सारे पावर सेशंस एक्सेट्रा आप देख सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. सो आई होप यू गाइज कैन टेक दिस फॉरवर्ड. आई वुड now like to hand it over to Abhishek sir, who will explain to you, who has been coordinating with all the leaders about our speakers today. Yes, so we will get on to who all would be, taking you through their experiences in this particular event. हम सभी स्पीकर्स को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एक के बाद एक. वो आपके साथ बात करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे. कुछ सवाल हैं जिनका जवाब वो देंगे आपको. The times have been testing, guys, and I hope आप सभी अपनी सेहत का, अपने फैमिली के, अपने नियर डियर वंस की सेहत का भी बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रहे हैं. With these testing times, we have not been able to have a couple of dignitaries out of all of the people that we had for this particular event. तो अनफॉर्चुनेटली सुमित गुप्ता और अमित कुमार अग्रवाल हमें नहीं ज्वाइन कर पाए हैं फॉर वेरियस हेल्थ रीजंस एज सच. बट वी आर गोइंग टू हैव अंशुल, वी आर गोइंग टू हैव फाल्गुनी मैम, वी आर गोइंग टू हैव प्रफुल with us in today's session as such. तो with that I would like to take you guys further ahead. जब हम अपने स्पीकर्स की बात कर रहे हैं तो आज आपके साथ जो लोग इंटरैक्ट करेंगे वो है प्रफुल,
Anshul and Falguni ma'am, right? Talking a little about Praful, ठीक है? Praful is the founder of MBA Chai Wala, a sensation amongst the youth already. Right? We would speak at length about his introduction once his segment starts. Right? With that, we have Anshul, who is working on technology for the future. जो हम मेटावर्स के बारे में सुनते हैं, वेब 3.0 के बारे में सुनते हैं, इन सारी टेक्नोलॉजी पर अंशुल काम कर रहे हैं. एंड यस, वी वुड बी टेकिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू दोस in his segment as well. After that, of course, we have Falguni ma'am, right, who is an amazing person, one of the most amazing persons that we have ever come across, right? A lady who is, an inspiration for one and all. And we would like to start off our discussion along with Falguni ma'am. I hope Falguni ma'am, we have Falguni ma'am with us. I would like to introduce Falguni ma'am to you. Yeah. Before that, so hi Falguni ma'am, great to see you on board here. She is an amazing speaker, guys, a TEDx speaker, somebody who is a motivation, especially to our female candidates. So guys, give a big round of applause to Falguni ma'am. Thank you, thank you, thank you. We can mute. Ma'am, you can take it forward from here. We have a few questions lined up for you, but any opening statement from you, then we'll come to our questions. Ma'am, yeah. Of course, since I'm meeting students and they are the bright future of the country. So very good morning to all of you. I am a professor, TEDx speaker, and a social media content creator. So healthily, you can stalk me on Instagram, on Twitter, on LinkedIn, on Facebook. And I think I love talking to young kids. And when I say young, it is relatively younger. So you can be a school kid, you can be a college kid, you can be a postgraduate college student. But I believe these are all aspiring MBAs, management graduates. Some are from higher secondary school also, I got to know. So it's a lovely Sunday morning investment for me. So I look forward to answering your questions. And I hope I can add some value to whatever you listen from me. Over to you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we have our set of questions. We would like to start with the first question. The first question is that you've been into academics and teaching marketing for almost 25 years now. What is your take on how the world of management has evolved over the years, and what kind of skills, abilities, trait the youth of today and potential leaders of tomorrow should work upon? Sure. So management, if I simply try to define, it's a process of getting things done. It's the art and science of getting work done. And management has various functions, right? So there is production, there is finance, there is HR, there is marketing. So I am more involved as a marketing professor since last 25 years. And this is one of the fields which has changed the most in the last 25 years. Why do you think marketing has changed? So marketing is not only selling, but marketing is creating new products and services of value, right? So bank is a service, and your perfume is a product, right? So it is about creating value by creating unique products and services, pricing them correctly, right? So every day you see price points change. Every day you see sales promotion offers being given by different brands. So Big Basket will say that, oh, we are giving 20% off. We are going to give you a coupon. All those are pricing strategies. The third is distribution in marketing. So you buy from a Kirana store, or you buy from the retail outlet of Star India Bazaar, or you buy online from Amazon.com. That is distribution. You make the product reach from the place of production to the place of consumption. And fourth and most important in marketing is promotion. You need to make your consumers aware that there is a new product, right? So there is a new series on Sony Live, which is Rocket Boys, which every student sitting here should see it. Every parent should make your child see it, because it is on ISRO, it is on rockets, it is on Homi Baba. Right? It is on Vikram Sarabhai and how they launched the first rocket, right? Using atomic energy. So now I was talking about advertising and making people aware. So this is a new show on Sony Live. Most people need to be first aware that a show has got launched, right? So they will use different ways of expressing and creating awareness. Today's Times of India, if you get in your homes,
You must see it. The first page of today's Times of India is reprinted from 1963 when the first rocket was launched, and they have given the same news of Homi Bhabha, of Vikram Sarabhai, of the space research being done, and in the center is the ad of Rocket Boys. Now what a brilliant plugin, right? So marketing is about creating the right product, pricing it correctly, distributing it correctly, and promoting it correctly. But most important, the question that these people asked me, that what are the changes that I have seen? Broad changes, the biggest disruptor or positive change has been Internet of Things. Second has been the advent of technology in almost all areas. Did you ever think that you can use a phone pay or a GPay or a Paytm or a WhatsApp to transfer money, right? So in finance, you see technology. You see augmented realities through the virtual goggles that Google produces. Sitting in Ahmedabad, I can see how the Ganga's evening aarti is happening. Technology. So advent of technology, right? Information technology, the advent of Internet of Things, everything has got tied with the power of internet, which has led to a lot of digital literacy, and it has changed the way in which people work and the way in which marketing happens. And most importantly, please do not forget social media. Do you know why this is an important change? Because in the 1980s and the 1990s, you saw a TV ad, you saw a print ad, right? You saw advertising happening on the outdoors, hoardings पे. पर आप उसके सामने कुछ लिख नहीं सकते थे. You did not have media to publish. Social media has given you the platform to publish. So consumers have become more powerful than ever before. So what do you do if your noodles that you ordered via Swiggy were soggy and they were not tasty? You will click a picture and put it on Facebook and complain. You will tag the restaurant brand. You will also tag Swiggy saying that, yeah, what noodles have you sent me? So you also have platforms to publish. And these are some of the changes. Recruitments, for example, if I take HR, recruitments are happening through LinkedIn. So how do you develop your LinkedIn profile well so that people who are going to employ you will see LinkedIn, right? So there is, I think it's a widespread change, but as I said, the major changes happening are, of course, because of globalization and liberalization. Technology entered our lives. Internet of Things have created challenges as well as opportunities, and social media has made the consumer more and more powerful and has given more avenues to the brand to go and advertise and talk about. Absolutely, ma'am. So, ma'am, here I'll probably make students write notes. These are younger kids. So, guys, क्या बोला है मैम ने, ध्यान दीजिएगा. There is an amazing series that has come up, Rocket Boys, if I got it correctly. Yes. It's an amazing series. Please watch that. Vikram Sarabhai was a legend in himself, right? So, an amazing marketing example you can see in today's amazing marketing example you can see in today's TOI itself. That's what, yes, ma'am said. Also, social media has become a very important thing, and you cannot escape that. जिसमें बच्चों Instagram, Facebook जितना important है, उतना ही LinkedIn का importance मैम ने बताया है. Everyone should study and be on LinkedIn is what ma'am has just said. Ma'am, yes, over to you, ma'am. If I can add something to this, because I see quite a few young kids, and I also see parents sitting with them, which is so good to even observe. Parents taking interest. So I just wanted to tell all of you that abhi aapko ye preachy lage, gyani lage, but why it is important to keep reading current affairs, why it is important to read at least the headlines in every newspaper you get at home, why it is important to see series like Rocket Singh, okay? General knowledge क्यों बढ़ाना है? Because आगे जाके जब आपके entrance exams honge for your graduation, for your post graduation, these are going to be competitive exams. So उसमें पर्सनल इंटरव्यू, जनरल नॉलेज सब टेस्ट होगा, तब आपके पास ये सब रेडी रहेगा. बिकॉज इन 2 days यू कैन नॉट प्रिपेयर जीके. ओके, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट इलेक्शंस कब आने वाले हैं इंडिया में. आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट तो सबको पता होता है, बट वाइस प्रेसिडेंट किसी को पता नहीं होता है. आपको पता होना चाहिए आपके एरिया में कौन से मिनिस्टर है,
आपको पता होना चाहिए आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब कब पता चलेगा? ये मगिंग से नहीं पता चलेगा, मेमोरी नहीं है ये, आपको न्यूज़पेपर रीड करना है. एंड जस्ट वन लास्ट पॉइंट आई विल से, न्यूज़पेपर डज नॉट मीन मुंबई मिरर और अहमदाबाद मिरर. न्यूज़पेपर मीन्स द मेन पेपर. ओके, हमें टैबलॉइड्स रीड नहीं करने, मिड डे नहीं रीड करना है, वो तो इनफ आपको इंटरनेट पे सब मसाला मिल जाएगा. Okay, but current affairs is what you have to be in touch with. Yeah, over to you. This brings us to that fact as well, that the kind of college that ma'am teaches in has that entire section for GK and current affairs. Abhishek had a question regarding the same as well. Yes. As ma'am was mentioning about the importance of reading और ये कैसे various selection processes में help करता है. तो मैम आप one of the most prestigious colleges के बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है. आपकी एडवाइस क्या होगी उन लोगों को जो इन एमबीए एंट्रेंसेस, मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक मैनेजमेंट या बी स्कूल क्या देखता है बच्चों में? व्हाट डज अ मैनेजमेंट बी स्कूल लुक इन अ कैंडिडेट एज सच? श्योर. सो हर एक एंट्रेंस जो होती है बी स्कूल्स की, कोई भी टॉप इंस्टीट्यूट्स ले लो, देयर विल बी फेजेस. ओके, फर्स्ट एक रिटन एग्जाम होता है, फिर अपना ग्रुप डिस्कशन होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है. अभी याद क्या रखना है, हर एक स्टेज पे एलिमिनेशन हो रहा है. ओके, सो जैसे 10,000 बच्चे ने रिटन एग्जाम दिया, उसमें से 3,000 ही बुलाए जाएंगे ग्रुप डिस्कशन और पीआई के लिए. तो रूल ऑफ एलिमिनेशन होता है. ठीक है, तो एट अ बेसिक लेवल वी सी योर इंग्लिश, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, योर वर्बल स्किल्स. सेकेंड लेवल पे वी सी योर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मैथ्स. ओके, थर्ड लेवल पे इन द रिटन वी सी योर लॉजिक, योर एबिलिटी टू डू रीजनिंग, आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो, राइट? सो द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर अ रिटन इज बाय गेटिंग कनेक्टेड विद कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक IMS. ओके, बिकॉज यू नीड गाइडेड ट्रेनिंग. आप अपने आप से नहीं कर सकेंगे, बिकॉज वो डिसिप्लिन नहीं आएगा. इग्नाइट तो इवेंट का नाम है, सॉरी, IMS विल डू योर मॉक इंटरव्यूज. IMS आपको टाइम बाउंड पेपर लिखवाएगा, तो कि कितने टाइम में आप कर सकते हो, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न के लिए. नाउ व्हेन यू गेट शॉर्टलिस्टेड एंड यू कम फॉर GD and PI, basically what we are looking at is your aptitude. Okay, your aptitude to be the right student for a management degree. मतलब आप इंजीनियरिंग करके आए हो, आप साइंस करके आए हो, आप कॉमर्स पढ़ के आए हो, तो आप में थोड़ा सा ये एबिलिटी होना चाहिए कि मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, HR आप समझ सको. सो दैट इज एप्टीट्यूड. ओके, व्हाट आर योर स्किल सेट्स? सेकंड, वी सी योर एकेडमिक credentials, so how academically strong you are. Okay, and third and most important, we see your knowledge of current affairs, general knowledge, right? How important it is for you to know what is local surroundings. मतलब हमको ऐसी बहुत, let's for example, one of my favorite questions that I ask in personal interviews to students is, tell me 5 current affairs that have happened in the last 1 week. मतलब मैं broad दे रही हूँ ना आपको, period भी. So it's not memory based, right? I'm not trying to check your memory. But आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं, इतना मुझे चेक करना हो तो इतना काफी है, right? So you can talk about how Saraswati Puja and the Prime Minister was in one particular city to unveil a statue. That is one. You can talk about that just now we got the news that Lata Mangeshkar has passed away, right? That's a current affair. You can talk about something political. You can talk about something voting pay. पर आप कब ये बात कब कर पाओगे? As I said, only when you are reading, right? Absolutely. The third is knowledge of current affairs and how updated you are. That we check. And fourth, we also like to check what are your hobbies. Like, आप तब ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तो, मेरी हॉबी है स्नैपचैट पे फिल्टर पे टाइम पास करना. वो भी अच्छा है. ओके, डू इट वंस इन अ वाइल. आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट. करो, राइट? फेसबुक भी करो, बट दैट कैन नॉट बी योर हॉबी. सो हॉबीज का क्या हो सकती है? रीडिंग हो सकती है, राइट? हॉबीज कैन बी अ मंडाला ड्राइंग. हॉबीज कैन बी पेंटिंग एंड स्केचिंग. हॉबी कैन बी सिंगिंग. तो आपको ये सब इंटेलेक्चुअल हॉबीज जिसमें से आपका ग्रोथ होता है. हॉबी कैन बी ऑल्सो गार्डनिंग. ओके, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ रीडिंग बोलो. सो वी विल आस्क अबाउट दैट. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर अस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
how are you as a human being? What is the value you bring on table? मतलब आप ऑनेस्ट हो, आप जेन्युइन हो, आपको कोई आंसर नहीं आता तो आप लाई करने की जगह ये बोल दो कि सॉरी बट आई डोंट नो द आंसर, Absolutely, ma'am. sorry I knew the answer but right now I have forgotten the name. मतलब कुछ Right. भी बोलने से अच्छा है कि आप अपोलोजाइज करके यू ऑनेस्टली से कि मुझे नहीं पता. Right. So these are some of the things that we look into. Right, ma'am. Ma'am, in fact, this brings us to that question where a few of these questions are coming from the chat from the YouTube as well as Zoom, where people are asking, you are into so many things yourself. You are into teaching, you are very active on the social media as well. How do you manage your time and how should they manage their time and advice Yes. for time management? Yes. Very nice. So all of us mostly are multitaskers, but if you say that I wear multiple hats, you're right. Okay. So how should you manage your time? Now, this is my favorite question because I'm talking to students and for them time is money. That's what I feel. ये समय वापस नहीं आने वाला है. Okay. Ask your parents. उनको अगर वापस पढ़ना है तो possible नहीं है. Right? So अभी ही time is money. So how do you now bring in that kind of discipline when you're doing multiple things? Set your priorities. For example, मेरा खुद का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. आई एम अ फुल टाइम प्रोफेसर एंड आई एम ऑल्सो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर. दोनों में से मेरा करियर कौन सा है? माई करियर इज ऑफ अ प्रोफेसर. सो दैट गेट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट. सेकंड प्रायोरिटी सोशल मीडिया के रील्स क्रिएट करना, पोस्ट लिखना, captions लिखना, videos बनाना, that is second priority. So as a student, all of you, right now, studies is your first karma and dharma. Okay. So karma or dharma आपका है studies. So studies is your first priority. Second priority may be आपको फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है. So second is football, right? Third may be watching movies over the weekend. तो प्रायोरिटी जो आपने रैंक की है 1 2 3 बेस्ड ऑन विच यू विल अलोकेट योर टाइम. सो जब आप बहुत बिजी हो स्टडीज में तब सेकंड एंड थर्ड विल नॉट हैपन. जैसे एग्जाम आती है तो योर फुल फोकस हैज टू बी ऑन स्टडीज. फुटबॉल वो 5 दिन आप नहीं खेलोगे, टीवी आप वो 5 दिन नहीं देखोगे. क्यों? बिकॉज योर प्रायोरिटी इज स्टडीज. सो डिवाइड योर टाइम बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटीज. Correct. So prioritization, बच्चों सुन लिया आपने मैम, right from the horse's mouth, right? मैम ने बताया it has to be prioritization, right? That is what you do. Ma'am, just a quick input if you can tell us, there are a lot of people who are in fact interested in becoming content creators, etc. How did you, there are a lot of pages who who work as social media influencer who don't have as many followers as you do. How did you end up ensuring that? Any tips for those people? Yes. So I think, see, it takes a lot of time and work. It doesn't happen overnight. पहले तो मुझे लोगों को ये बोलना है. And please don't start as your journey as मुझे तो एक दिन influencer बनना है, ऐसे कोई बनता नहीं है, right? So first become a good content creator. Create content every single day. Invest in that if it is going to be your almost like your second career, right? But find out what are you good at. So everybody is not good at making videos, but you are good at singing. So your content has to revolve around singing. Okay. Everybody is not good at gaming, but आप quizzing बहुत अच्छा करते हो. So आप quiz master हो almost. So your content should be around quizzing, right? So find out your key areas of expertise and based on that, create content, but regularly create content. Number 2, understand this is a conversational platform. तो आपको comments के जवाब देने हैं, inbox में जो messages आते हैं उसके जवाब देने हैं. So be a conversationalist. Like आपने content post कर दिया. Ma'am, sorry to interject here. There is a question related to this. How do you deal with trolls? Because there are students I asking. have a strategy. Yes. I have a strategy. So I call it learn, listen, and cut the crap. Okay. So firstly, if people are disagreeing, you learn their point of view. You understand what they are saying.
then you listen and learn. So difference of opinion is okay. Hum sab alag log hai, right? We can have different perspectives. So listen and learn. But there are people who just want to harass you. And hence they are using abuses, they are using negative words, which breaks the whole healthiness of the discussion. Cut the crap, outright block them. You are not here to justify your existence to anybody on social media. If anybody even makes you 1% uncomfortable, please block them. Mera blocker list is higher than the follower list. Because I am not here to give you free content and entertainment at the cost of my mental peace and health, right? Cut the crap. Learn, listen, but the last stage, cut the crap. Wonderful, ma'am. That should really go. मुझे छोटे बच्चे इसलिए स्पेशली बोलना है, ट्रोल्स से डरना नहीं है, उनको ब्लॉक करना है. ट्रोल्स की वजह से खुद की प्रोफाइल प्राइवेट नहीं कर देनी है, उनको ब्लॉक करना है. ट्रोल्स की वजह से आप पिक्चर्स, वीडियोस, कंटेंट अपलोड नहीं करोगे, ऐसा नहीं करना है, राइट? You just have to take them off. They should not have a right to view your content. Absolutely. Wonderful, ma'am. I think they should really go well. Ma'am, it was an amazing experience for us. We took a few questions that were coming specifically for you. I understand and appreciate from the depth of my heart how it is to take out time on a Sunday. But absolutely thankful to you, ma'am. And we will keep having you whenever it is possible. Right. One last question is... what if yes. So when people are asking this question, that people often end up plagiarizing the content or reposting without giving due credits. So don't worry about them. The world is full of copycats. They can copy paste my content, but they cannot take the Falguni with them, no? They can take away my content, they can copy paste, but where is my style? My style is my style. My 25 years of work is my work. Right? My 2 gold medals are my gold medals. My academic credentials are my academic credentials. Chori to hogi internet ke zamane mein. Don't fear about plagiarism. It's speaking more about them, and you should not be worried about that. Keep growing. Keep growing. Right. Great answer, ma'am. People in the studios became very excited here as well, right? Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you. You can take away your content, but not your identity, is what ma'am is trying to say. Yes. Thank you very much, ma'am, for joining me. Thank you. Thank you. Thank you. It was a pleasure. Yes. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Give ma'am a big round of applause. Thank you, ma'am, for sparing. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you. They all can look me up on Instagram and follow me if they are there. If they are on Please take out some time. You can see what ma'am does on Instagram. She is an inspiration, especially to our prospective women leaders. I have gone through a lot of the TED Talks, etc. Please follow ma'am on Instagram, and you can find her there giving you amazing advice. And I'm sure she will reply to you, as she said. That's her mantra. She will reply to you if there is a question. Instagram ID is Falguni Vasavda, and on this I will leave now. Okay, thank you. Yes, thank you, ma'am. Thank you very much, guys. I'll get my presentation up again, and I'll announce a few important things before we get an amazing person here to speak to you guys. Anshul sir should have, or I think might have already joined in, but at this point I would request everyone to see that we are trying to connect you and trying to create potential leaders, whether it be with IMS or with Orphicy. यहाँ पे जितने भी लोग हमसे YouTube पे जुड़े हैं, ठीक है, all our IMS students, all our alumni, all our parents, और जो बच्चे हम पे Zoom से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं जो हमने इसी ऑब्जेक्टिव से चालू किया है. एट अ यंग एज, इफ वी कैन हेल्प डेवलप द हॉबीज ऑफ स्टूडेंट्स, इफ वी कैन डेवलप देयर रीडिंग स्किल्स, देयर कम्युनिकेशन स्किल, हमें वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो आगे जाके इंटरव्यूज में, जॉब अपॉर्चुनिटी के वक्त फेस करनी पड़ती है. इसी प्रोस्पेक्ट में मैं सारे हमारे आईएमएस के बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा ये एक पूरी इनिशिएटिव है कॉल्ड मिनी एमबीए प्रोग्राम जो ऑर्फिकी चलाता है. एक मिनी एमबीए प्रोग्राम शुरू हो रहा है कल से.
जिसमें हम लोग पब्लिक स्पीकिंग, ईमेल राइटिंग, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशंस एंड शार्क टैंक इवेंट करवाते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई भी नेबर्स हो, कजिन्स हो, रिलेटिव्स हो, जूनियर्स हो, सिबलिंग्स हो, जो 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में बिलोंग करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसका इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाएं। यू कैन मेक इट रीच टू दैट ऑडियंस। वो कहीं भी है, इट्स एन ऑनलाइन प्रोग्राम, सो वो कहीं भी है इंडिया में, वो ये मिनी एमबीए ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सम पीपल आर सेइंग दे हैव डन द मिनी एमबीए, दे लव दैट। आपको मैं यूट्यूब चैनल पे भी हमारा लिंक भिजवा दूंगा, जो आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इस मिनी एमबीए की सारी इंफॉर्मेशन उस लैंडिंग पेज पे आपको मिल जाएगी। At the end of the mini MBA program, you get a certificate, okay, which says you are a mini MBA, guys. Okay, so I hope this is clear. All my IMS students, team members, parents, I hope you will help me. और कल के ही प्रोग्राम में हम हमारा हाउसफुल कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे मैं मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लिंक जाए, वो इंफॉर्मेशन जाए। अर्पित सर शायद अभी वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम ले रहे, पहुंच रहे, ठीक है। अर्पित सर इज रीचिंग यू गाइस। ओके, अंजानी हैज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अपूर्वा इज रजिस्टर्ड, विवेक का कमेंट में यूट्यूब पे देख पा रहा हूं। हर्ष गिरी, आर एलुमनाई, हैज जॉइंड इन, एंड John Snow, people from India abroad, Mr. Ambitious have joined in. Zeal, thank you for your comment. Purv, Rishabh, wonderful, wonderful, Mehul, for your comments on YouTube. Okay, thank you, Trisha. Now we will have Anshul sir, and Abhishek sir is going to introduce him. Anshul sir and Abhishek sir, over to you. Absolutely. So the world that we live in, right, and the world that we are leading to rather, हम बहुत ही ज्यादा वेब 3.0, मेटावर्स, गेमिंग, इन सारी चीजों की बात करते हैं, राइट। And to speak about that, we have a person, right, and we could not have found a better person than Anshul to talk about such technology, right, to talk about the company that he has formed and the company which is working on such technology. We have a few questions for him. He's from an IIT, he's from an IIM, right, he's working on so many different technologies of the future. On that note, I would like to welcome Mr. Anshul Rustagi. Anshul sir, I hope you're here, and a big round of applause for Anshul sir. Great, guys. I would like to help him join in. Our team will get him to join in, but we will talk about his profile. How many of you know what metaverse is? What metaverse is? Anshul sir, if you are there, I'll request you to just, we'll lower all hands right now, and we will request you to raise your hand. Anshul sir, by what name he would have joined in, we can just look at that, or Jaidev sir can help connect with Anshul sir as well. Yeah, so by that time, how many of you have heard of metaverse, guys? Can you tell me, मेटावर्स कितने लोगों ने सुना है, देखा है वीडियो मेटावर्स के बारे में? If you can just look at it, if you can just give me in the chat box. YouTube पे chat box flooded होना चाहिए बच्चों, और Zoom पे भी मेटावर्स सुना है कि नहीं? Okay, we will lower all hands. I would request Anshul sir, if he is here, he can just ping us in the chat box, or anyway, Jaidev sir can help connecting with Anshul sir as well. But maybe we can have Abhishek sir connecting. You can, connect him there. Okay, guys, metaverse 3D universe है, कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। कौन बना रहा है मेटावर्स? कैन यू टेल मी चैट बॉक्स में, कौन बना रहा है मेटावर्स? Okay, Burhanuddin has just mentioned. Wonderful. Okay, yes, we will have Zoom पे मेरी टीम try कर ही रही है search box में, putting in Anshul sir. Yes, okay, Mark Zuckerberg, wonderful. Yes, is the one answer. We also have Facebook, Meta as a company, ठीक है, इसीलिए Facebook का पूरा ब्रांडिंग चेंज हुआ। आई होप आप लोगों को मालूम है इसके ऊपर, ठीक है। यू हैव सीन द वीडियो। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, मेटावर्स पे पूरा वीडियो देख पाएंगे। सर पार्टिसिपेट में सर्च करिए, या so we will have, sir, search, yeah, yes. So we would have metaverse. लोगों को मालूम है, ठीक है, लोगों को मालूम है। Wonderful. So that is
ग्रेट, दैट लोगों को मालूम है मेटावर्स के बारे में। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। मेटावर्स के अंदर का एक प्लेटफॉर्म है जायन वर्स, राइट? उसी जायन वर्स पे वर्क कर रहे हैं अंशुल रस्तोगी जी, ठीक है, एंड हिज कंपनी टोटलिटी कॉर्प, राइट? सो यस, so yes, so and we would like to have Anshul sir joining in. He is coming in just 2 minutes, yeah, and yes, he will talk about what Xeonverse is all about, right? Till that time, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यही 3D technology as well as working on the animated AR, that is augmented reality based content, virtual reality based content, is something that Orphicy is doing. हमारे मुकेश पारिक सर इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, एंड अमेजिंग वीडियोस आप बहुत सून देखने वाले हैं ऑन द Orphicy ऐप। यस, सो मे बी आपको किसी एक दिन हम आपको मुकेश पारिक सर से भी मिलवाएंगे, बट हु कैन टॉक अबाउट व्हाट ही इज डूइंग एंड ऑल। यस, so we have Anshul sir. We are just waiting for Anshul sir to join in. Guys, quickly do a search on Anshul Rastogi sir, and you can know what he is working on, right? And anything, sir, you would like to add about his academic profile about Anshul sir? Absolutely, absolutely. So he's one of those people, right, who've been to an IIT and then he saw the opportunity in value generation amongst people across the globe, and he did an MBA. और उसके बाद ये जैसा उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, आई एम बैंगलोर से उन्होंने ये MBA किया है अपना, and to be able to identify where the world is led, right, how to generate value not only in the existing world but what lays ahead in the future, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करने में इनका जो academic journey रहा है from an IIT to an IIM Bangalore in specific has helped him a lot. We've just had an update on Anshul. Anshul is joining the session, right? He would be with us very, very, very shortly. I know you guys are, awaiting Anshul's presence like anything, and he would be here very shortly. There was a slight technical glitch at his end, and we have sorted that, and he should be into the meeting very, very soon. Okay, yes, and there are questions now coming in. Ankita Kar asking, how can we realize our own potential? Ankita, my answer to that question will be very, very simple. When you have great mentors, when you meet the right people, right, when you meet the right people, you have great mentors, and ultimately it has to be a work put in by you, ठीक है? अच्छा, अभी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे बोलना चाह रहे कि मैं ही अंशुल रस्तोगी हूँ, तो देयर आर लॉट ऑफ फेक प्रोफाइल्स दैट कम इनटू बीइंग। इनफैक्ट ऐसी एक फेक प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे अंशुल सर और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स की बनती रहती है, तो जब आप इनसे कनेक्ट करें ना इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, एंश्योर यू कनेक्ट विद द राइट पीपल। वी हैड दैट एक्सपीरियंस विद आवर टीम आल्सो, राइट? ध्रुव देसाई सर, Dhruv Desai sir was a victim of that, right, for a short bit, yes, but you have to check the authenticity of the profile, and there are various ways to do that, right, and you would be able to identify. I hope Ankita you got your answer. बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आंसर दिया। Anshul sir has just joined in, right? So Yes. मैंने आपको आंसर दिया. It has to be great mentors with your own motivation, somebody who is there to guide you when you are stuck. Okay. Anshul Rastogi sir has just joined in. We would make him a co-host, right? And we would welcome sir. Sir had sent an amazing message for you guys before he decided to join in today. Anshul sir, I think you will now be able to share your camera. Yes. Absolutely. A very warm welcome, Anshul sir. We've been, everyone in the audience has been, pumping to hear you, pumping to see you, watch you, talk about what you're here to talk about. Anyway, Anshul sir had a video, right, in which he talked about his mentor, his role model, and what ignited the spark of entrepreneurship in him, right? And Anshul sir, if you have any opening statement for the students before we have our set of questions to you, you may go ahead and do that, sir. Sure. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure to be here, especially talking to students, our future, our country's future, eventually our company's future, and everything that we are doing in the ecosystem. I think my only opening statement is that, this is probably one of the most exciting times that we are living in for the changes that are coming. And India is really rightly positioned, to take advantage of this.
Web3 is bringing a completely new area of technological change, and all you students are in the perfect position to actually start building your career in this space, contribute to the ecosystem, make India the global leader, and also while you do that, make a lot of money for yourself. So I'm really, really excited that this opportunity is there for all of you and also for us, so that we can get your help to create this large ecosystem. Wonderful. Wonderful, wonderful, sir. Sir, more than us, all of the audience, right? So we had, floated this question, any question that you would like to ask the speaker. And the most heated question was that, Anshul, sir, is being called the Mark Zuckerberg of India. So what is your opinion on that, Anshul, sir? If you could enlighten students on your opinion for that. No. So look, I mean, thank you so much that someone thought that I'm worth being called, as good an entrepreneur as Mark Zuckerberg. Facebook has definitely changed all our lives. Not everything is good about changes. There are definitely some things which, need to be better. And that's why the changes that are coming in Web3 are there. But definitely so much positive addition by Facebook of companies, WhatsApp, Instagram, and it has completely revolutionized what all of us do. I think, I just have an idea as to what I think the upcoming changes are. I'm inspired by a lot of entrepreneurs. Mark Zuckerberg is definitely one of the top visionaries in the tech world. And I think the change he has brought in terms of educating everyone for metaverse and Web3 is phenomenal. And that will always go down in history as the moment when the entire world got to know about metaverse, and what would have probably taken 3 to 4 years, he did it in one day itself. So I think that's commendable. I won't really comment about any of the other statements because there is a long way for me yet to prove that worth. Right. Sir, one question that is coming in currently live is that you had an amazing journey from the IIT to the IIM. Number one would be you would have had an option of going abroad. Why did you choose an IIM? How did that change your perspective? And I'll add another question to this is, what should students do if they have entrepreneurial dreams from college onwards? These are the two questions, sir. Yeah. Great. So, look, for most measure, I would say I did a lot of things based on, so my father is from IIT Delhi also. So, for me, the path was luckily a lot clearer that I need to get there. And because my father was from there also, my first cousin is from there also, I was like, I really want to get to, IIT Delhi. I was lucky and fortunate to get there. I did get a job from IIT Delhi in Capital One, which was in the US. This is obviously, 2001. And I was also, preparing for CAT. So I got an option to get into IIM Bangalore, was very fortunate about it. And at that time, I really wanted to stay in India. So a lot of the reason, obviously, IIM Bangalore is an amazing choice to get into anyway. So was Capital One as a place to actually get a job. But I decided the thing that tilted it in favor of doing the MBA now from India was definitely that I wanted to stay in India. As luck would have it, however, I ended up going to London from IIM Bangalore for the next decade. So Okay. It was interesting that even though the reason was that I wanted to stay in India, I eventually moved out. IIM Bangalore was a great experience, amazing network. I would say probably the most, I always tell this to people, probably the most competitive environment that I have faced, right? I mean, even hedge funds are very, very competitive, but finance is very competitive. But IIM Bangalore, the way it's structured is extremely competitive and really motivates you to work and learn a lot more. Great network of alumni. Obviously, brand names in colleges help, but none of the brand names can assure success. They can only contribute a little bit more towards opening of doors. So I think that was really the reason to go to IIM Bangalore and stay there rather than go abroad. But as I said, as luck would have it, I went abroad right after my MBA. So you mentioned that you've been to IIM Bangalore and it has been a great launchpad in setting you up into the professional world. You also mentioned that you were preparing for the CAT examination, one of the most coveted MBA entrances in India, right? During your bachelor's.
Now, a lot of students are wanting to know that yes, getting to an IIM or getting to a top B school, it does provide you the launch pad that you are wanting to have. But during the journey of preparation, the preparatory part of CAT or any other examination as such, what does that teach you? How does that, makes you a person you are in general, sir? Yeah, great point. I think, look, a lot of value attached to a lot of the competitive exams is right, because I think, like I said, nothing in life comes with the pros and cons. There are definitely some cons to the way that we do these exams and the competitiveness. But the pro for someone like me was definitely that, there is a clear goal. There is a structured approach to attain that goal. And so by and large, as you are attaining that goal, you learn the value of discipline. You learn the value of committing to something. You definitely fail a lot in that process, whether those are your tests, whether those are your ranks that you get. You have to start detaching yourself. So I think one of the things that as you get these ranks, and happens with most of us, is that, you suddenly start saying that, my rank is my self-worth, which is also generally in life where you relate to, like, my business success is my self-worth, and I'm only as important as the success I attain. And I think the good part of initially these lessons are, as you face these failures, one thing you need to mentally and psychologically prepare is the success is one thing that you're doing that doesn't define you, right? That so success and failure will come for everyone in every field of their life, right? Some we know about, some we don't. So we may feel that people who are very successful, like Mark Zuckerberg, may not have faced as much failures. I can tell you everyone faces failures at their own sort of level, right? So I think this starts preparing you a little bit mentally for, what happens with these exams and the results is not what defines my life. It is definitely one milestone. It's a very important milestone. If you're able to clear your milestone, and the way to judge it is, did you give it your best? If you didn't, do you want to reattempt it to actually then give your best? And as much as you can, try to detach away from the result. So I feel that the dedication, the structured approach, discipline, and preparing you mentally that, failures are going to be a part of your journey is actually are really important lessons that you always get. This is what I always say about games also, right? I'm not saying that getting to this milestone is like a game, but a game is like a much relaxed way to actually go through the same process also, right? Where you are immersing yourself, you're trying to get to a particular goal, and it has the same sort of lighter touch of feeling and mental strong-headedness that you get out of all of these preparations. Right. So I think that's one of our follow-up question as well. There are people asking about number one is a career in gaming, because a lot of these students are very fond of gaming. Should they pursue it from right now? Also, sir, to know another thing, did you think about entrepreneurship from your college days itself? These are two questions, and then we'll come to the question on Totality Corp as well. But these two questions, sir. Yeah. Sure. So let me answer the entrepreneurship one first. I definitely wanted to become an entrepreneur from IIT itself. Actually, in my third year after our sort of our internship, so I did 2 summer internships after my second year and my third year as well, which is the mandatory one. But after my second year internship, I was really interested to build what has now become a SaaS, what has now become SaaS companies. Because when we went into these factories and industries, I saw there were some softwares which were being used, which were very, very expensive even at that time. And every company had to buy them. And my idea was like, this is illogical, right? Like the software cost is once, the company is selling the same to everyone, and it's so expensive. And the value is a lot. So our initial idea was we will create that software and actually rent it out to companies, which was effectively the SaaS model. So actually me and 2 of my friends started writing that code and we built that product. But as life would have it, right, this is year 2000. The internet bubble started bursting. Startup became it wasn't very popular word in India anyway, and it started becoming a very, like you can't go there. And like everyone, the societal pressure to first get a job came, and in the entire thing to actually end up getting a job, I think all our energies got down, right? And so we just went down the path. I think all 3 of us went down the path of doing jobs and getting careers. Actually 2 out of the 3 of us are now entrepreneurs. So I think that fire was there. I think what I love is that now I meet a lot of students who are actually starting companies in their second year, first year. I just met someone yesterday
who is 4-year graduate out of college, is already doing his 5th company, and he has sold 2 of them, right? So 2 did not work out, 2 he has ended up selling. He's on his 5th company, 4 years out of college. I mean, astounding to me, right? I had my startup journey starting so much later in my life. I'm very happy and grateful that I did something that I'm so passionate about. But what I love is that now the environment in India is that it supports entrepreneurs. It's a very accepted and coveted sort of career for you to take. So I think that's amazing, and that's a big change that we are seeing. On gaming, I think there is no better time now than ever for becoming a gaming entrepreneur. And there are 2 reasons. One is, see, gaming anyway has been gaining a lot of popularity world over. And like the 2000, when internet was really becoming big and technological solutions globally were becoming big, India also again has a very big cost advantage, right? So in IT, whether you're an Android developer, a smart contract developer for blockchain, that arbitrage has disappeared, i.e. the people who got like, if you get paid X in the US, you're getting maybe closer to X in India as well. In gaming, fortunately or unfortunately, that gap hasn't closed yet, which also means that there is a lot of opportunity right now for growth, right? So if you're passionate about gaming, you want to build your career, you want to build a business, this is the right time where I feel that the next HCL and Infosys of gaming will be actually made out of India, where there will be a large community of gaming developers who will develop for the world. So that's one reason why it's a really, really good opportunity. So whether you are MBA minded and you want to do something for the gaming industry, a developer, an artist, a marketer who is interested in gaming, all these careers are going to boom. The second aspect is, one of the foundational pillars of Web3 is immersion, right? Like, my view of immersion is not really VR as to how this Web3 and metaverse is going to come out. It will still remain, mobile first. But irrespective, whatever we do in gaming with respect to 3D worlds, animation, 3D art, game physics, interactions are actually going to be required even more as Web3 adoption takes place, right? So that's the reason why there is a much bigger push now towards gaming. And so imagine whatever careers people were making on SEO, website development, then move to app development, backend, etc. In the next 5 years, the most coveted positions in technology will actually come from the gaming industry. And those will be the people who will have the fastest careers and the highest amount of salaries as well. Wow, sir, that's absolutely great input. So, guys, I hope you have been listening to sir talked about the importance of discipline, setting a goal, and then the process of reaching there. Don't judge yourself on your result, or one upset should not define you, is what sir just mentioned. Sir, we now have a question on Totality Corp. Yes. So, sir, the world is wanting to know what is in store for the world to expect from Totality Corp and Anshul going forth. Sure. So look, at Totality, we are creating Zineverse. Zineverse is, you should consider it, this is the future of social network. Like you had Facebook and like you have Instagram and TikTok. Now your social networks and your digital ecosystems will be based on gaming worlds. So Zineverse is a social network being built for India, by India, right? And we are actually building all our content around Indian culture. I feel like there's a massive emotional connect we already have to it. And I think the time is now right that the young audience, the Gen Z and millennials, actually interact with such content on something which is more modern setting, more technologically appropriate to what the younger generation is actually interacting with. The days of Indian culture only being limited to TV are over now. And I think the world now needs to see the richness and depth of Indian culture and really, learn from it. And in addition, obviously, this is part of Web3. So you will get ownership of everything that happens inside these social networks. So these are NFTs. We launched our first NFT, Lakshmi NFT, in December of 2021. So around 1.5 months back, we did a sale of 4 crore rupees of those NFTs, all bought in India, which was tremendous. So we got a tremendous response from people in India. Our next set of NFTs and tokens will be coming next month. So for people who want to become part of our community, please join our Discord channel, which is discord.gg/Zineverse. Join our socials, get to know about what we are doing, contribute your view to what we are doing. And if it interests you and you want to also own our NFTs and tokens,
then would love that you also participate and help us grow this vision. So we are very, very, as I said, focused to create the social network for India by India, and we are going to be one of the largest social networks in Web3 in the world. Wow. Wow, sir, that was amazing. And guys, I hope you heard this. You can follow Totality Corp Anshul sir on the social media, and you will know what all is there. You can even contribute. I can see a lot of you asking questions, etc. Better to contribute to them directly rather than us. So that would be great. Sir, one very interesting question was, which was the first game that you ever played? That was one question that has come here. So the first ever game I played was actually, I don't know any of you would know this. This was Space Invaders on Atari. So if you search for it, Space Invaders was the first game. The second was Joust. My father used to travel for his industrial work to different countries. He got me a Atari console when I was a kid, and I had been hooked on to games ever since. And the first one I remember very, very clearly is Space Invaders games on Atari. Wonderful. So yeah, many of us started our first experience with Atari as well, but I think these kids might not have an idea. So yeah, great. So great talking to you. It was. I'm thankful from the bottom of my heart that you spent your time on a Sunday for these kids. I'm sure they would have got exposure. Now they'll get thinking. I'm getting comments like how to buy a Lakshmi NFT, what's the process and things like that. What is your marketing strategy to make market your NFT? These are the questions. So would you like to take that, or maybe suggest them where to go? Yeah. I think great questions. Lakshmi NFT is already sold out. All our products are launched on our website, which is zionverse.com. As I said, what is best is to follow us on any of our socials, whether that's Twitter, @thezionverse, or our Discord, discord.gg/Zionverse. I think those will be the best place for you to ask us questions. We are very active answering everything. There is a very active community of people engaging with each other, teaching each other NFTs and Web3. And we get to learn a lot from our community, and amazing suggestions we get from the community itself to, market the product well, how to design it. We share a lot of information on those as well, and would love to answer these questions on those socials also. Wonderful. Sir, thank you. And I'm sure sir would also appreciate, sir, academically, we are one of those organizations that tries to ensure that an entrepreneurial spirit is infused in them right from the very beginning. In that process, we do Ignite. Yes, that's how it is. Yeah. Love this. This is a great session, and always love talking to students, as like I said, our country's future, our company's future, the future of the ecosystem. So thank you so much for inviting me here. Thank you, sir. Thank you, sir. I am sure it was a pleasure for the students. I can tell you, sir, there would be some prospective people who can probably join, who are looking at joining Totality Corp as well. These are all going to go to the top schools and maybe one day be with you. Thank you, sir, for sparing time. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Thank you. Okay, guys, I hope you had a wonderful experience with the two speakers. जो बच्चे हमारे साथ कल से जुड़ने वाले हैं मिनी MBA के लिए, the smaller kids, कल से अलग तरीके के सेशंस होने वाले हैं. आज ये टॉक शो है, कल से जो सेशन होगा वो इंटरैक्टिव लेक्चर्स होंगे. तो आपको मैं कल भी देखना चाहता हूँ. Nobody is going anywhere. Okay. Great. So now I think Abhishek sir has some announcements to make, and we will go to the interaction with the next speaker. Abhishek sir, over to you. तो बहुत ही सारे बच्चे जो हमारे साथ YouTube लाइव पर जुड़े हुए हैं, वो कैट 23 एस्पिरेंट्स भी हैं. इन्होंने कल एक रोड टू IIM करके सेशन है, वो भी अटेंड किया है. इन लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट है आज शाम को 4 बजे. राइट, द लिंक्स हैव बीन सेंट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन देयर ईमेल्स, द रजिस्टर्ड ईमेल्स. You have to take this test. This is one of the rarest opportunities that you get at IMS Gujarat to secure any amount of scholarship for your CAT preparation programs. With that, for the next set of students, बहुत सारे students जो join in कर रहे हैं वो CAT 22 भी आई कर रहे हैं, ठीक है, गोल कर रहे हैं, एम कर रहे हैं. उनके लिए next Sunday we are bringing in a session which is called How to Crack a 99 Percentile in CAT 2022.
This session would be based upon the analysis of last year's CAT, that is CAT 21. इसे जो सर लेने वाले हैं वो खुद एक MDI मैनेजमेंट कॉलेज है, टॉप 10 में आता है इंडिया के, उसके ग्रेजुएट है, एंड दिस ईयर ही हैज स्कोर्ड अ 99.97 percentile himself, right? So no better than him to take you through that session. So for all of the people who are interested in this particular session, I would request Karthik sir to put in the link of the Google form where you can register for this particular session. Karthik sir, if you can do that a few times for all of the students on YouTube, right? So that, you know, the students would have the link available with them for the session. On that note, we would... हमारे कुछ बच्चे ये जूम पे पूछ रहे हैं कि क्या हम भी ये टेस्ट दे सकते हैं. जो हमारे बच्चे जूम पे हैं, जो स्कूल में हैं, उनके लिए एक अलग टेस्ट होगा ऑन द 13th of February कॉल्ड ऑनसेट. आपका एक अलग टेस्ट है. जो यूट्यूब पे हमारे बच्चे हैं, जो कॉलेज में हैं, उनके लिए एक अलग टेस्ट है. वी विल बी पुटिंग द दैट ऑन द YouTube chat box. Okay, guys. Now I think Abhishek sir will just a quick piece of information. यहाँ पर scholarship test tomorrow 4 p.m. लिखा है. It is not tomorrow. It is today at 4 p.m. That is Sunday 4 p.m. 6th of February. So you guys would be taking the test today at 4 p.m. Right? Again, yes. Right. So we will introduce the next speaker. और बच्चों इतना operationally काफी डिफिकल्ट होता है, तो मैं देख रहा हूँ कि अपूर्व मिश्रा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. हम आपको ये नेक्स्ट स्पीकर की पूरी स्टोरी बताएंगे, ठीक है. पूरी स्टोरी वगैरह बताएंगे. अभिषेक सर अभी शेयर करेंगे, उनकी प्रोफाइल बताएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि कैसे कुछ मिसहैप होने के बावजूद उन्होंने हमसे कनेक्ट किया है. राइट. सो गाइस, hold on tight. Abhishek sir will be telling you all about our next guest and how he will be giving answers to your question. I hope the team is ready with the inputs. Yes, please. तो सभी लोग काफी बेताबी से वेट कर रहे थे प्रफुल्ल बिल्लोरे का, राइट? सो ही इज अ सेंसेशन अमंगस्ट यूथ ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स एंड एल्सवेयर एज वेल. मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे, हु इज आल्सो नोन एज द MBA चाय वाला. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का है ना ये कंफ्यूजन होता है सर, that you know certain people who are absolutely top notch, certain students who are absolutely top notch, वो IIT में भी जाते हैं, वो IIM में भी जाते हैं, सब जगह जाते ही हैं और चले जाते हैं, बट लार्जर क्राउड तो सर एवरेज लोगों का होता है. वो कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? एंड प्रफुल्ल इज वन ऑफ दो स्टोरीज. तो प्रफुल्ल was one of those students who was also preparing for certain MBA entrances, right? But through the way, right, he realized that academically वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, बट उससे उन्होंने हार नहीं मानी. He did not, you know, get demoralized or demotivated by that fact. He was on his way to generate value. Though he joined an MBA program as well, right? But the way he thought about things, the ideas that he had, and the difference that he wanted to create in the society for the better, right? Just a matter of fact, he's not the only chai wala making the difference for the better in our country, right? We all know the other person, amazing. Again, a huge shout out to Narendra Modi ji, who's our Prime Minister, right? Great. Again, coming back to Prafull, right? Prafull ने MBA चाय वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट किया. मतलब ही स्टार्टेड ऑफ विद अ टफरी, जो हम बोलते हैं ना चाय की टफरी, और वहां पर उन्होंने ये किया. मतलब आपको लाइफ में सीखना क्या है कि अगर कोई भी एक ऐसा एसेट स्किल जहां पर आप दूसरों से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, so there is no point that you would ever get halted back for anything. And he started with that, and his journey has been tremendous. Since then, he has 30 plus outlets in the country. Absolutely. Now he was there. 50 outlets by the end of this year. Yes, so he's targeting more than 250 outlets by the end of this year. He was including one in Dubai and Singapore. Yes, so including one in Dubai and Singapore as well. He was to join us live here, but he was at an inauguration of one of his outlets in Guwahati, जहां पर क्या कहते हैं हम, वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट डिले हो गई और अभी वो फ्लाइट में है. ठीक है, सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम while we are having this live session, he is in his flight. But what he made sure was, for the questions that we had for him, right, he was able to answer those questions, right, have a recording of audio to us, and we would be
taking those questions and we would be hearing it from Praful himself, what he had to say about the questions that we had for him. और बच्चों इस स्टोरी से आपको ये समझना है, somebody who was not really successful with the exam that he was aiming for, पर इस प्रोसेस ने ही उन्हें इतना अच्छा बना दिया कि वो एक एमबीए की तरह सोचने लग गए और उन्होंने जो काम किया वो काम इतने अच्छे से किया, चाय बेचने का काम भी इतने अच्छे से किया कि आज वो इतने बड़े पर्सन बन गए। हम लोग उनसे जो क्वेश्चन पूछने वाले उनके आंसर्स क्या है बच्चों, हम लोग ये सुनेंगे अभी। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी आस्क्ड हिम? यस, तो सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया था कि आप फेलर्स को हैंडल कैसे करते हैं और उससे बाउंस बैक कैसे किया करते थे और आपका क्या ओपिनियन होगा या सजेशन होगा फॉर द यूथ, ठीक है। और एक फेलर को कैसे आप अपना स्टेपिंग स्टोन बना सकते हैं टुवर्ड सक्सेस इज द क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड हिम एट फर्स्ट। वी विल हैव द आंसर स्ट्रेट फ्रॉम Praful now to you guys. It should be an audio, right, guys? If you are audible, if it is audible to you guys, do let us know with a yes in the chat quickly. So बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। IMS परिवार इग्नाइट 5.0 इनिशिएटिव 1.0 से 5.0 पे आ गया, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। So thank you very much. I am प्रफुल्ल बिल्लौरे और MBA चावल आप सब जानते होंगे। So first question which came is how to handle failures. So failure is nothing but a देखना चाहिए, फेलियर्स को हमें देखना चाहिए मिरर की। राइट गाइस, आई थिंक थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर था। हम आपको आंसर फिर स्टार्टिंग से सुनाते हैं फॉर द क्वेश्चन दैट वी हैव ऑन योर स्क्रीन्स, राइट। सो वी विल स्टार्ट द आंसर फ्रॉम प्रफुल वन मोर टाइम। 1.0। सो बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। IMS परिवार इग्नाइट 5.0 इनिशिएटिव 1.0 से 5.0 पे आ गया, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम प्रफुल्ल बिल्लौरे और MBA चावल आप सब जानते होंगे। So first question which came is how to handle failures. So failure is nothing but a stepping stone. क्योंकि failure और success का ऐसा हिंदुस्तान में नाम होता है। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोग कंपैरिजन करते हैं, काला सफ़ेद, छोटा बड़ा, पैसे वाला अमीर गरीब, या इस जाति का या उस जाति का या इस धर्म का या उस धर्म का। That's how success and failure became in not just about countries across the globe. Why do people compare success and failures? They both are nothing, just word. इन दोनों का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, इन दोनों का एक अपना एक सिग्निफिकेंस होता है और एक दोनों का रोल है। अगर रात नहीं होती तो दिन की क्या वैल्यू, अगर फेलियर नहीं होते तो सक्सेस की क्या वैल्यू। तो फेलियर्स को मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टेपिंग स्टोन की तरह देखना चाहिए, फेलियर्स को हमें देखना चाहिए मिरर की तरह कि वो हमें मिरर है। अगर आपको गलतियां नहीं दिखेगी या कोई बताएगा नहीं, और एज ए फाइनेंशियली टर्म में देखो या इमोशनल टर्म में देखो कि अगर आप कोई लॉस करते हो, आपका कोई रिश्ता टूटता है, रिलेशनशिप में भी आप देखते हो फेलियर्स का, तो आपको वहाँ से पता चलता है कि क्या गलत था, किस आदमी के साथ मैं अपना रिलेशनशिप बना रहा था, किस पार्टनर के साथ मैं अपना बिजनेस खड़ा कर रहा था, या कौन सी ऐसी मैंने स्ट्रैटेजीज यूज़ करी जो गलत थी, विच लेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेस फेलियर्स हो गए। क्योंकि जब तक आपको शीशा नहीं दिखेगा, जब तक आपको रिपोर्ट्स नहीं दिखेगी, आपके चेक्स एंड बैलेंसेस पता नहीं चलेंगे फेलियर्स के माध्यम, जब तक आपको रिजल्ट नहीं पता चलेगा, आप यू विल नॉट इम्प्रूव। आप समझो, आप टीम की तरह देखो, कोई क्रिकेट टीम है, अगर वो कोई सीरीज हारती है, मैच हारती है, तो उसके बाद उनका माइंडसेट बड़ा चेंज होता है कि यार ये बॉलर को हटाना पड़ेगा, ये विकेट कीपर को लाना पड़ेगा, ये बैट्समैन को लाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मैच नहीं जीत पाएंगे। दैट्स हाउ सेम इट गोज विद द लाइफ, विद द बिजनेस लाइफ एज वेल। सो टेक फेलियर एज इन it is a learning process. It teaches you what to do and what not to do. It's all about trial and error. It's all about permutation and combination. So I think failure. I hope my voice is coming through now. एक बार repeat कर दूंगा सर ने क्या बताया। प्रफुल्ल सर has just mentioned कि failures mirror की तरह होते हैं। failures होंगे तो ही सक्सेस क्या है वो पता चलेगा ना, उसका स्वाद पता चलेगा हमें। That is what he said. So failure से डरना नहीं है, ये बात हमें बताइए। I hope this is clear to you. हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछे थे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था
वो। और बच्चों आपको ये बताने के लिए कि आज ये खुद की अकेडमी भी खोल रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा आपको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सर, So the next question is, क्या एक पर्सन दुनिया बदल सकता है? क्या वो एटलीस्ट एक किक स्टार्ट ले सकता है जहां पर उनके विजन में सारे लोग जुड़ जाते हैं एंड द डिफरेंस इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द डे? तो सवाल ये है कि प्रफुल्ल सर, क्या आप समझते हैं कि एक इंसान डिफरेंस क्रिएट कर सकता है या नहीं? उस पर उनका जवाब सुनिएगा। So we'll have the answer in a very short bit to you guys. He might be the face, she might be the face, but now one अब आप person सभी can change आंसर the world. सुन Yeah, पाएंगे one person प्रफुल्ल can change सर। the world, but not just one person. He might be the face, she might be the face, but फेस से कंपनियां नहीं चलती, कंपनियां चलती लोगों से, स्ट्रक्चर से, फ्रेमवर्क से और प्रोसेस से। क्योंकि कभी भी किसी इंडिविजुअल व्यक्ति ने बड़ा कभी नहीं किया है। आप कोई गायक को भी देखो, प्रोड्यूसर को देखो, डायरेक्टर को देखो, एक्टर को देखो, किसी फाउंडर को देखो, एंटरप्रेन्योर को देखो, उनके पीछे लोग होते हैं, उनके पीछे उनका परिवार होता है, उनका भाई होता है, उनका हस्बैंड होता है, उनकी वाइफ होती है जो उनको कंपनी करती है। और कभी कभी होता है किसी का एक सिक्का अगर चल जाता है तो कुछ लोग होते हैं किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए, कुछ किंग बनना चाहते हैं, कुछ किंग मेकर बनना चाहते हैं। तो दोनों का अपना एक इंपॉर्टेंस है और दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मजबूरियाँ होती हैं। तो इट यस, लेट्स टॉक अबाउट महात्मा गांधी। उन्होंने सोचा कि मैं अपना पढ़ाई कर चुका हूँ, लॉ कर चुका हूँ, अफ्रीका से मैं भारत आ गया, मैंने ये प्रॉब्लम देखी, मुझे अंग्रेजों के खिलाफ जाना पड़ेगा। वो अकेले चलने लग गए, दांडी मार्च यात्रा हो, नमक कानून की लड़ाई हो, अब जो भी, वो अकेले ही चलने लग गए अपनी लाठी के साथ, और लोग आते गए, एक आया, चार आया, हजार आए। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है। एंड नाउ टेक अ लाइफ एग्जांपल फ्रॉम लाइफ ऑफ हार्ले सैंडर्स ऑफ केएफसी, केंटुकी फ्राइड चिकन, एक छोटा सा चिकन का ठेला केंटुकी जो शहर है यूएस में, 65 साल की उम्र में हार्ले सैंडर्स ने चालू किया। आप क्या समझ सकते हो कि उनकी उनकी मृत्यु 5 साल के बाद ही हो गई थी, 70 साल की उम्र में, बट आज केएफसी पूरी दुनिया में उनका चेहरा भी है, वहीं से हम लोग भी इंस्पायर हुए। द पॉइंट हियर इज कि चालू कौन करता है, बड़ा कौन बनाता है, और बहुत बड़ा कोई और बना देता है। सो दैट्स हाउ इट ग्रो। So we need to understand कि it takes time, it takes so much efforts of people, team, and their contribution, or be either financially, emotionally or financially, which doesn't matter, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। तो आप अकेले चालू हो, आगे जाके टीम बड़ी होगी अगर आपका विजन ठीक है, आप अगर जेन्युइन हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, आपका रिश्ते बनाने की ताकत अच्छी है, आपको लोगों को संभालते आते हैं, उनको विजन देने आता है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ओके गाइज, वंडरफुल। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड द आंसर। मैं रिपीट कर देता हूं, आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि आप सर को देख नहीं पा रहे हैं, पर बिकॉज ऐसा एक नेचुरल कैलामिटी होता है, तो क्या होता है कई बार हमें ये फेस करना पड़ता है। उन्होंने फिर भी एफर्ट लिया हमारे आंसर्स को करने को। इन्होंने ये बताया कि KFC, कंटेकी फ्राइड चिकन, राइट, जो हम जानते हैं, इसके फाउंडर 65-year-old पर्सन थे। तो क्या क्वेश्चन ये था, क्या एक आदमी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? तो शायद एक आदमी शुरुआत कर सकता है, पर अकेला वो कभी नहीं होता, हमेशा वो एक टीम एफर्ट होती है। आपके साथ कोई ना कोई, आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, आपके साथ में आपके और लोग होते हैं, और जो इस कंपनी को फिर आगे ले जाते हैं वैसे लोग होते हैं। और कुछ लोग फाउंडर से भी अपनी बड़ी बना देते हैं एक कंपनी को। दिस इज व्हाट ही हैज जस्ट मेंशन्ड इन हिज आंसर, राइट राइट। सो इनकी कंपनी का भी मिस्टर प्रफुल्ल का यही विजन है कि शुरू उन्होंने कर दिया है। आज वो एमबीए चाय वाला का फेस है, पर वो ऐसे बहुत सारे लोगों को क्रिएट करना चाहते हैं, और वो एक अकेडमी चालू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को प्रोड्यूस करने की, एमबीए चाय वाला अकेडमी बोल के। तो मुझे उसके बारे में भी अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। एंड वी विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आस्क्ड हिम, एंड द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, आई होप माय टीम इज रेडी। जहां पर हमने क्वेश्चन क्या पूछा था सर? Importance of skill development, and what is your message to youth regarding how the process of working towards a goal matters? वो process का क्या importance है, और वो process क्या आपको सिखाता है, और वो कभी waste नहीं जाता, was the question. तो आप उस प्रोसेस से क्या सीखते हैं, ये सवाल उनसे हमने पूछा था।
let's talk about skill development, right? The third question which came. So skill development is very much important in today's youth. You are youth, I am youth. So around 70-75 crore of people in India are of age of 35, less than 35, 38. So it is a big number. India is a country of demographic dividend is there. India is a country of youth. India is a country of students and entrepreneurs like us, which those who are very young. So हमको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है या कहीं गलती से डेमोग्राफिक डिजास्टर ना हो जाए, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है वो किसी दिन वीकनेस बन जाती है, और किसी की कोई चीज़ अगर वीकनेस होती है तो वो स्ट्रेंथ बन जाती है. टोटली upon us, because how do government take, how do parents take, how do society takes youth, it matters a lot, and it changes the way the result or outcome will become from the youth perspective. But today, being youth, I would say it's our own individual's responsibility to play that role, either for yourself, for a family, for a society, or for a whole nation, because सब लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करना चाहिए, करते ही हैं. और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की ये आज़ादी की बात की दूसरी लड़ाई है जो हमारा देश लड़ रहा है. पहली हमारी आज़ादी की लड़ाई थी अंग्रेज़ों से, अब ये दूसरी आज़ादी की जो लड़ाई है विचारों से है. अपने मम्मी पापा को और सोसाइटी को अपने ताने जो आप सुनते हो, आपको आगे काम नहीं करने देते हैं, आपको रोकते हैं, ये मत कर वो मत कर, रिस्क कैपेसिटी नहीं है उनके पास, वो कुछ नया नहीं सोच पाते, फिक्सिंग है, MBA करना है, MBBS करना है, इंजीनियरिंग करनी है, इसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते, उसकी आज़ादी की लड़ाई है. सो इट्स नॉट अबाउट पेरेंट्स. आपका सोसाइटी में आसपास के लोग, रिश्तेदार, आपके स्कूल के टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर क्या बात करते हैं, वो आपको कुछ नए आइडियाज़ देते हैं कि नहीं. यू टॉक कि कैट नहीं तो क्या, MBA नहीं तो क्या, इंजीनियरिंग नहीं तो क्या, MBBS नहीं तो क्या. देयर शुड बी ऑलवेज ऑप्शन एंड देयर आर ऑप्शंस, बट हम लोग देख नहीं पाते. समटाइम्स वो कोई दरवाजा हमें ऐसा लगता है बंद है, बट वो आपको लगता है लॉक है, बट वो लॉक नहीं होता. छोटा सा पुश करना होता है और वो दरवाजा खुल जाता है. कभी हमें रिंग बेल बजानी पड़ती है ताकि अंदर से कोई आके दरवाजा खोल दे. पर अगर आप धक्का नहीं दोगे, पुश नहीं करोगे, रिंग बेल भी नहीं बजाओगे, फ़ोन नहीं करोगे कि दरवाजा खोले, तो कोई आपके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा. इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू टेक इट. सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. और इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ एंड यू कैन नॉट जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड और टेल. पॉलिटिशियंस बोल के आज प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं कि यूथ, बट आर वी रियली सीरियस कि हमारा जो पोटेंशियल है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, हम लोगों के ऊपर है या हमारे ऊपर सिर्फ पॉलिटिक्स हो सकती है, कोई और हमारा फ़ायदा उठाएगा, या सिर्फ हम लोग की नौकरी पैसे के लिए बने. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड योर इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन इंडियन एंड बीइंग अ यूथ एज वेल इन दिस कंट्री. क्योंकि अगले 10 से 15 साल, 20 साल अगर कोई देश तरक्की की राह पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहा है तो वो भारत है. सबसे ज़्यादा हमारा ज़बरदस्त GDP का ग्रोथ है. आप समझो तो स्टार्टअप कल्चर देख लो, यूनिकॉर्न्स देख लो, IPO रजिस्ट्रेशंस देख लो, आपकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का जो आप रैपिडली ग्रोथ देख रहे हो. हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग हर दिन, हर महीने, हर साल स्टॉक्स में आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, ट्रेडर बन रहे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट के राउंड हो, फंडिंग के राउंड हो, या जो भी हो, ये सबसे ज़्यादा अगर तेज़ी से आज किसी देश में हो रहा है तो हमारा देश हिंदुस्तान है. And we need to understand, and we need to embrace the power of technology. We need to embrace the power of collaboration. We need to embrace the power of consistency. We need to embrace the power of never give up. And that's how we can grow as a country unanimously. वंडरफुल गाइस, क्या अमेजिंग मैसेज है. उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने बात करी कि हमारे पास, हमारी कंट्री के पास में वो पावर है आज, क्योंकि यूथ का पावर है. पर यही यूथ का पावर अगर अच्छे से यूज नहीं किया गया तो डिजास्टर हो सकता है, इज व्हाट ही इज आल्सो मेंशन. ठीक है, तो ये सोच से लगना होगा. हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को सपोर्ट करना होगा, वो एंटरप्रेन्योर्स बन पाए, आगे जाके बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ पाए, जिस कंपनी में भी आप काम करें उसको आगे बढ़ाने की सोचें, इज व्हाट ही जस्ट मेंशन. He also mentioned the fact कि अगर किसी कंट्री का चांस है कि वो वहां एंटरप्रेन्योर्स थ्राइव कर सके, वो इंडिया है. ठीक है, इंडिया में ही कितने सारे एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फंडिंग के ऑप्शंस बनते जा रहे हैं. तो आई एम श्योर आप लोग सब भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप करने की अपने तरफ से सोचेंगे. यू आर ऑल गोइंग टू बी MBAs, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा. आगे जाके आप लोग सब अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने का ही सोचे, वॉज द मैसेज फ्रॉम हिम. सो गाइज, आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर. दिस इज व्हाट आर स्पीकर्स वांटेड टू शेयर, राइट. ये स्पीकर्स यही बताना चाह रहे थे. एनीथिंग फ्रॉम योर एंड, अभिषेक सर?
Again, I believe it has been an experience worthwhile for all of the people in attendance. You guys have been a lovely audience. You guys have had a lot of messages from all of the speakers. Takeaways आपने जरूर लिए होंगे, and do apply that into your real life and make the difference for the better. That is what Ignite is meant for. That is what this particular event was meant for. And we would keep on coming with such more events in the near extended future. We have Ujjwal sir with a message. Yes, Ujjwal sir. Yes, so I am sure आप लोग सब शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते होंगे, राइट? सोनी पे वहां पे देखेंगे ये सारे जो शार्क्स है ना, वहां पे वो सारे एमबीएज हैं. सो आई वुड लाइक टू रियली पुश आवर कम्युनिटी ऑफ मिनी एमबीएज, ऑफ आवर एमबीए एस्पिरेंट्स, जो हमारे ऑर्फिकी के बच्चे हैं और जो आईएमएस के बच्चे हैं. आगे जाइए, अपना बेस्ट दीजिए. आई एम श्योर यू विल मेक इट टू द बेस्ट ऑफ कॉलेजेस. And even if by any chance you don't make it to the best college, it is okay. Careers are made even without it. This process should be done truthfully, honestly, with integrity. आप ये जो तैयारी करने का, पढ़ाई का प्रोसेस अच्छे से करेंगे ना, तो सक्सेस आपके सामने आएगी ही. Guys, thank you for joining us. I hope you loved the effort that the entire team of interns and the team at IMS and Orphicy made. आप में से कुछ लोग अगर थोड़े से भी डिसअपॉइंटेड है, हम अपोलोजाइज करते हैं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द गेम. द शो मस्ट गो ऑन, राइट? दैट इज व्हाट इट इज. आज 4 बजे कैट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है. ओनली कैट 2023 के एस्पिरेंट्स. जो बच्चे कैट 2022 देने की सोच रहे हैं, वो नेक्स्ट संडे हमारे यहाँ आए. हमारे ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं आप. हमारे कांटेक्ट नंबर्स यूट्यूब चैनल पे हम डाल रहे हैं. बड़ौदा का, विद्यानगर का और अहमदाबाद का नंबर सर अभी डाल रहे हैं. ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन. जो बच्चे हमारे जूम पे हैं, आप लोगों का कल से मिनी एमबीए शुरू होगा. प्लीज आइएगा. ऑनसेट एग्जाम होने वाला है 13 से. आप आइएगा. जिन लोगों का ऑनसेट एग्जाम हो गया है, वो लोग जरूर अपनी काउंसलिंग बुक कर लें. हमारे आईएमएस के स्टूडेंट्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके नेबर, सोसाइटी में जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो यंगर लॉट है, जो अगर स्कूल में है, हमारी ये एफर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की, ये एफर्ट को हेल्प करें. और आईएमएस के सारे स्टूडेंट्स जो है, या जो भी हमारे एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, वो ये मिनी एमबीए प्रोग्राम के बारे में जरूर बताएं अपने लोगों को. अभिषेक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एंटायर एफर्ट रिलेटिंग टू दिस. थैंक यू टू द एंटायर टीम. Keep learning, guys. Keep growing. Good luck. All the best. ग्रेट गाइज, वी विल साइन ऑफ. कल हम लोग मिलेंगे. अच्छा, जूम पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ रुकूंगा. यूट्यूब चैनल वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं बाय वेव करता हूँ. यूट्यूब चैनल को हम क्लोज कर सकते हैं. जूम पे जो बच्चे मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मिनी एमबीए को लेके या जो भी, वो रुक सकते हैं. ठीक है, बाकी जिनके क्वेश्चंस आंसर हो गए वो लोग जा सकते हैं. हैव अ हैप्पी संडे एवरीवन. राइट, ग्रेट, थैंक यू एवरीवन.